सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी। We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Wakar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो नहायती एहतराम से, अक़ीदत से 23 मार्च का दिन को सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में, और ख़ुसूसन अमेरिका में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। और इस बार लॉस एंजल्स में एक बहुत ही अजीम शान प्रोग्राम हुआ, रैकेट ब्रेकिंग प्रोग्राम था वो, जिसको पाकिस्तान लिंक और सफ़ीर पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया फिनिक्स क्लब के सब्ज़ ज़ार पे, जिसकी रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्तों में आपको दिखाएंगे। वो पूरा 1 घंटा का प्रोग्राम होगा। इसके अलावा कौंसल जनरल हामिद अज़हर ख़ान साहब की रहायशगाह पे भी एक फ्लैग होस्टिंग की तकरीब हुई, परचम कुचाई हुई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। वो रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। नाज़रीन, दूसरे प्रोग्राम जो है वो रिपोर्ट शिकागो से है, न्यूयॉर्क से है और मुख्तलिफ़ शहरों से आई है, जो हम आपको आज दिखाएंगे। शिकागो में भी एक तकरीब हुई है 23 मार्च की, जिसको हमारे ब्यूरो चीफ अंसारुद्दीन ने कवर किया है, और न्यूयॉर्क में जहांगीर लोधी ने न्यूयॉर्क में होने वाला प्रोग्राम जिसको कवर किया, जिसमें इस बार मलिया लोधी ने भी शिरकत की। तो ये प्रोग्राम है 23 मार्च के हवाले से जो आज हम दिखाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही खुसूसी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जैसा जानते हैं कि एक बहुत ही मशहूर और अहम तरीन एयरलाइन है एमिरेट्स एयरलाइन। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से, बांग्लादेशी से, एशियन से, इंडियन से पूछें कि आप जब अपने मुल्क जाते हैं तो किस एयरलाइन से जाते हैं, वो ये बताएंगे कि जी हम एमिरेट एयरलाइन से जा रहे हैं। उसकी वजह है कि एमिरेट एयरलाइन रेगुलर है, प्रॉम्प्ट है, उनकी सर्विस ग्राउंड पर भी बहुत शानदार है और ऑन एयर भी बहुत शानदार है। और अब जो उनकी एयर बसेज़ हैं उनकी सीट्स बहुत वाइड, काफ़ी अच्छा रूम ब्लैक है, कुशादा है, तो आप बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं। तो एमिरेट एयरलाइन जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली एयरलाइन है, जिसने बहुत तरक्की की है। यहाँ के जो रीजनल हेड हैं जनाब अकबर हुसैन साहब, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं एमिरेट एयरलाइन को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाने के लिए। हाल ही में टॉम ब्रैडली एयरपोर्ट लॉस एंजल्स के टर्मिनल पर एमिरेट एयरलाइन ने फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस लाउंज का आगाज़ कर दिया है। उसमें मेरा जाना हुआ और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। ये बिज़नेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास लाउंज जो है नहायत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है, बहुत ही रिलैक्सिंग है, काफ़ी चीज़ों का एक्सेस है। इसके अलावा मसाज सेंटर भी है और प्रेयर सेंटर भी है। और इस मौके पे वहाँ के सेल्स मैनेजर और मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट से मेरी बातचीत हुई है, तो वो भी रिपोर्ट में आज तक आपको पहुँचाऊँगा। लेकिन जो बहुत अहम रिपोर्ट थी वो जनाब मतर साहब से मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, वो भी आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। इसके अलावा आज का लोकल ग्लोबल भरपूर है। स्टे ट्यून्ड विद सफीर पाकिस्तान, डोंट गो अवे, वॉच ऑल द वे सफीर पाकिस्तान। आवाज का जादूगर, शहंशाह सुरसंगम,
Rahat Nusrat Fateh Ali Khan, the living legend. Back to Los Angeles in concert, Pasadena Civic Center Auditorium, May 17th, Sunday. Proud presentation of Dylan and Tisha Entertainment. Call for a ticket and sponsorship today. ناظرین آج یہاں پہ لاس اینجلس میں جو ایل ایکس بہت مصروف ترین ایئرپورٹ ہے اس کا یہاں پہ بزنس لاؤنج اور فرسٹ کلاس لاؤنج کا آغاز ہو چکا ہے. ان کے 9 کے قریب جو ہے فرسٹ کلاس بزنس کلاس لاؤنج ہیں پورے امریکہ میں, اور یہاں سے جو ہے ان کی فلائٹ بہت بزی ہے اور بہت اہم فلائٹ ہے اور فل جاتی ہے, اور جو ساؤتھ ایشین امریکن ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اور آج یہاں بہت اچھا آغاز ہوا ہے, تمام میڈیا بزنس کمیونٹی یہاں پہ آئی ہے اور بڑے خوش ہوئے دیکھ کے اس بزنس لانچ کو. اور یہ سب اس میں ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن جناب اکبر حسین صاحب کا ہے, جو انہوں نے بڑی محنت سے اس لائن کو اسٹیبلش کیا ہے پورے امریکہ میں. مینی ایئرس ہی از ورکنگ ود ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایمریٹ ایئر لائن سے فلائی کریں گے اور انجوائے کریں گے. ہاؤ ڈو یو فیل ایمریٹ ایئر لائن ورکنگ ود ایمریٹ ایئر لائن؟ I'm very pleased. It's great working with such a successful airline. What about you? Same here. It's an amazing airline. It's very successful and it's growing every day. Nadir, today is a very, very important day here in the Los Angeles airport. LAX is the busiest airport, and today I'm meeting Mr. Matar. He's the key personality from Emirates Airline, and today is a historic moment taking place in the LAX airport. The Emirates Airline opening the business and first class lounge. As you know that the Airbus is flying from San Francisco and from LA and from all over America, and is a very, very popular airline among all the nationalities, not even only Pakistani, then Americans, Bangladesh, Indians, you name it. And I really enjoyed it myself. Even I'm traveling in economic class, but seats are very wide, lot of leg rooms. And today I am here with Matar. Let me ask you a question, and we'll show you the lounge, okay? Mr. Matar, thank you very much. How are you? Fine, thank you. Thank you for being here with us. First of all, I really welcome you to Los Angeles. Why you have decided to open the business and first class lounge here in LAX? Of course, anywhere we go, is it in US or anywhere else, we look after our customers, product on ground and in the air. So LA is very important for us. We fly to 9 cities in America. LA is very important. That's why we decided to have our own lounge here for our first class and business class premium passengers. You know, for first class and business class, we have got dedicated chauffeur drive service, dedicated check-in for them.
and dedicated lounges everywhere. This is the number 37 lounge we have opened on our network. So this is very important to have the lounge here in LA airport. I see. So tell me, what are the future plans of the Emirates Airline? Where the Emirates Airline is really heading? Because you have a lot of other airlines in the ground, you know. So how do you feel among other airlines? No, okay. Emirates Airlines, since 30 years, we have our plan. We are working well, and we are growing, and we are opening more gates. So we are happy with that plan. I see. So this business lounge, what is the capacity of this business lounge? This is around 146 seats for first class and business class. You know, we operate Airbus A380 to LA, and the capacity of the lounge is coping with our passenger load figures in first class and business class on our A380. So how many lounges so far you have in America? In America, we have in JFK, in New York, we have in San Francisco, and this is the third one in LA. Do you have any plan to open any business lounge in Washington, D.C. or Chicago in future? We look everywhere, and we see if there's a necessary we open passenger load wise, etc., etc. Yes, we do. Not in America, everywhere in network we operate, from Australia to Europe to Africa to America, because we do feel that our customers, first class and business passengers, do deserve to have their own lounge when they are traveling, and that's why we have opened here in LA. I have a very important question that out of your clientele and the business network and the passengers, I know that how do you feel that what is the percentage of the Asian Asian community you are taking away? You see, this airline from 30 years we have gone, we carry many passengers, many nationalities. It is, you can say, African, Pakistanis, Indian subcontinent, Australians, Middle East, Arabs, to Iran. From LA to Iran we carry passengers. It is all nationalities, I can say, because we fly to more than 143 stations to 6 continents. So that is very easy for people to move, passengers, I mean, move between here to Far East or to Indian subcontinent, vice versa. So then maybe to Africa, from America to that place. So we do carry many nationalities on passengers, yeah. How do you rate your airline among other airlines who's really out of the Middle East or out of the world? No, I mean, everybody, not we, I mean, passengers talks about that. Emirates is on top brand quality. So we try to work hard to keep that brand quality on the ground and in the air. So that's why we see Emirates on the top of the airlines. I see. Okay. Do you have any special plan for Umrah and Hajj upcoming season? Yeah, Hajj and Umrah we do because we have so many Muslims. They come from everywhere via Dubai. We carry them to Saudi Arabia for Hajj once in a year, and Umrah is all the time. People can go and privilege the Hajj. So yes, we do. We do have a plan. We work very closely with the government of Saudi Arabia, with our people in Jeddah and in Medina, where we fly to make sure we transfer Muslims there to see Mecca and Medina. Yes, we do that. Any other Airbus is coming to America? I know that you're flying from San Francisco, from LAX, from New York. No, we fly to 9 cities, and our schedule is there. So we fly to 9 cities in America. So that's okay. How do you feel in LA today? I am very happy to be in LA. LA is one of the good cities, marvelous cities, I can say, weather-wise. People are friendly. City is good to walk in. I like LA, actually. Always I try to come to LA when I have time. I'm here only for 48 hours. I was here last August here in LA. I like America, and I like LA and New York, I have to say. Otherwise, when people, friends in New York will get angry. But LA is a nice place to be. I see. Do you have any exclusive message to our South Asian American audience who always fly Emirates Airline? Well, my message to them, please be comfort that we at Emirates Airlines, we are there to take care of you. We are there working day and night to make sure the product is the right product for you. Even they are traveling in economy, business class or first class, we are always there to make sure they are happy with us. We have to make sure that we carry them with the immediate connection out of Dubai. We are there here to make them happy all the time. Today is really a historic moment, and they have
many important business first class lounge all over America, and they're flying from 9 cities. And I think, as you know, that Emirates is like a brand name among the South Asian Americans and myself. Emirates Airline, by far, the most dependable, the most luxurious airline. I am a travel agent and I sell quite a lot of Emirates and never... Mazda Travel, huh? Did you? Sorry? Are you from Mazda Travel? Yes. Yes, I'm from Mazda Travel, and I must say that, you never get any complaints as regards service at the airport, as regards service in Dubai, as regards service on the aircraft. I mean, very easy to sell when you don't have complaints. In fact, you have more and more referrals, people saying fly Emirates. It's, as Emirates stands for, it's very exclusive, detail-oriented, definitely a very classy and beautiful lounge. Okay. How do you rate Emirates Airline? Based on my personal service, I would say A+. Definitely the best of the best. Okay. You are very happy, or you are very excited about opening the business and first class lounge today in LAX? I think it is, yeah, and it's great, not only Emirates, also for the city of Los Angeles and all premium travelers who come in and out to Los Angeles and experience our beautiful city. Fly Emirates Airlines and especially visit Los Angeles. Outstanding. What do you think? What do you think? I think we had great support and a lot of folks here. No, thanks for coming out and supporting. This is our third lounge in Los Angeles. So no, thanks for the support. We look forward to handling all of our premium customers here. Representing the Consul General of the UAE. You know, the UAE is a very, very important country, and people really flying over there, enjoying it. Excellent country, as good as America. So what do you feel today, mashallah, the opening of the lounge? We're actually very happy to see Emirates opening their own lounge here in Los Angeles. We're happy to have both our national carriers, Etihad and Emirates, and I think it's great for the bilateral relationships also and economic relationships between the UAE and the US. And we're very happy to see this opening, and we hope for more progress and to see more of the national carriers progressing in both whether it's LA or the other American cities. Excellent. Last question. As you know that the 2020, the World Expo is going to UAE, Dubai. So are you planning a big thing for that? Emirates is a major sponsor for that particular bid, the Expo 2020. So I'm sure the committee and the people that are involved are planning a major events concerning that event, and I think they're in the preparation now, and they do announce whenever they have any plans going forward. You know, yes, we're selling a lot of Emirates tickets because it's one of the best airlines you can think of in this moment. This airline has everything. Business class is just not like a business class like other carriers. This business class is completely different. You know, they treat you like a king and a queen. And as you see, the lounge has been completely exclusively for Emirates Airlines. And this is not only Los Angeles. Every airport around the world, you will see that. Oh, really? Yes. Okay. So your clientele is South Asian American? Most of my client is American. And basically, I sell high-end, first class and business class. You know what? It's really relaxing. It's when I come here, I feel like I'm at home and I'm at ease, and I can almost go to sleep. It feels almost as if I'm in a 5-star hotel or a resort. I think that it's the epitome of the luxury experience, from the foods, the selection of alcohol. It's the best. It's a great concept. That's all I can tell about it. We do use Emirates Airlines on the high-yield business class, first-class passengers. And coming to the lounge today and having experienced the business class when the 380 flew into Los Angeles, I can easily say that the business class, first-class experience of
Emirates Airlines starts from the lounge, it looks like. It's an awesome lounge, beautiful lounge, beautiful amenities. It does resemble what you're going to be getting on board as well. So I think this is a good addition to what Emirates Airlines brings to the Los Angeles market. How do you rate Emirates Airline? Well, again, coming from our passengers who fly high-yield business class, first class into Africa, they all came back with a plus 10 plus. So if 10 is the best, then I guess it's above 10. And how long you are operating this tour? This is the second year. We have an awesome program coming up for 2016 as well. 15 is sold out, but we'll come aboard for the 16 and not only enjoy the great river cruises of Europe, but also the Africa program, and definitely Emirates Airlines taking you down to Johannesburg with a perfect stopover in Dubai. It's a great experience to be here. नाज़रीन, राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान बड़ी धूमधाम से आ रहे हैं 17 मई को। सेव द डेट, डोंट गो अवे, बहुत ही शानदार कवाली होगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और सफ़ीर पाकिस्तान इसका मीडिया पार्टनर है। तो स्टे ट्यून, रिमेंबर द डेट, मई 17। नाज़रीन, तीसरी बड़ी ख़बर यह है कि सफ़ीर पाकिस्तान कैपिटल हिल में इस बार 10वीं अवार्ड नाइट मुनक़्क़द कर रहा है, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने अपने शहरों से नॉमिनेशन भेजें लोगों की जिनको हम अवार्ड से नवाजें। ये इवेंट बहुत ही पुरवकार, शानदार होगी। स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको हैरत होगी कि हु इज़ हु कमिंग इन दैट कैपिटल हिल अवार्ड नाइट ऑफ सफ़ीर पाकिस्तान, May 31st. Don't forget, save the date. लॉस एंजलिस के मशहूर पाकिस्तानी और इंडियन बाजार आर्टीदिया पायनियर बुलेवार्ड को प्रॉमेनाड में तब्दील किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले पाकिस्तानी और इंडियन अपनी सकाफत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उनको एक तफरी मुकाम मुहैया किया जा सके। इस मौके पर मेयर आर्टीदिया मैगेल ने खिताब किया और ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। I love it. This is a great day for Artesia. Today we break ground on Pioneer Boulevard. A great vision of our council and a great vision that's been around for about 8 years. So we're happy to do that. So how much time are you going to take to really finish the job? Well, it all depends, but we're hoping to go ahead and make sure that we can finish it within a year or two, more than 2 years. Good afternoon, and on behalf of my colleagues, city manager, and our staff, the residents of Artesia, I would like to thank you all for coming to celebrate the groundbreaking of Pioneer Boulevard and our Pioneer Boulevard project. This project's been in the works for nearly 10 years. For over 8 years, nearly 10 years ago, our city manager and city council had a vision of improving Pioneer Boulevard. Several staff members like Chuck Burkhardt and Hui La also played a key instrumental role in that vision, such as wider sidewalks, parklets, outside dining for our merchants, additional trees, and eco-friendly plants. The goal was to slow down Pioneer Boulevard and traffic and make it a place where our merchants would prosper. See, we could keep Pioneer Boulevard as a 6-way highway that allows our neighbors to get to the 91 freeway. And we'll lose $5 million of bond money that has been waiting for Pioneer Boulevard redevelopment. So we're not going to let that happen. This new council of ours, the one that we have a similar vision to that of over 8 years. We have a new city manager, Mr. Bill Rawlings, and we have new council members. But what separates this vision from the vision from 8 years ago is a vision that we're going to go ahead and not have a highway. We're going to have that smaller road, a place where individuals could go ahead and sit down and eat. We're going to have a promenade. We're going to make sure that we have those wider sidewalks as we wanted originally. We have the green, more trees and eco-friendly plants.
But we also want to attract our residents to be able to have a diverse dining palette. We want to make sure that our residents are shopping and eating in the city of Artesia. So we want a Wi-Fi system throughout our Pioneer Boulevard, but we also want a Wi-Fi system throughout the entire city of Artesia. And we're going to have that. Today we will lead. Today we become that small trailblazing city with a smart growth vision. I personally am honored to be a member of the Local Government Commission and Smart Growth America. I have gone to Washington, D.C. and Colorado to see the function of several of these cities and how they have done their livable communities. But there are not too many cities with a population of 16,000 people that have our similar vision. Today we make history. Today we lead, and today we're going to break ground. आवाज का जादूगर शहनशाह सुरसंगम राहत नुसरत फतेह अली खान द लिविंग लेजेंड back to Los Angeles in concert Pasadena Civic Center Auditorium May 17th Sunday. Proud presentation of Deland and Tish Entertainment. Call for ticket and sponsorship today. السلام علیکم دوستو، میں ہوں راحت فتح علی خان اور میں آ رہا ہوں آپ کے شہر لاس اینجلس میں. ہمارے کانسرٹ کی ٹکٹس آج ہی لیجئے. میرے ساتھ ملاقات کیجئے اپنے شہر میں. لاگ آن ٹو www.facebook.com/RFAKworld. ناظرین، پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس اینول ڈنر 14 جون کو منعقد کر رہا ہے، جس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بڑے پیمانے پہ پذیرائی کی جائے گی، ان کو ریکگنائز کیا جائے گا. آل ڈے ایکسپو ہوگی اور شام کو اینول ڈنر ہوگا، بینکوٹ ڈنر، جس میں پاکستان کے معروف اور مشہور کنگ آف قوالی غلام فرید صابری برادرز شرکت کر رہے ہیں، جس میں امجد صابری اپنے شاندار فن کا مظاہرہ کریں گے. تو اسٹے ٹیون، سیو دا ڈیٹ 14 جون. صابری قوالز کمنگ ٹو لاس اینجلس. اینول ڈنر، پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس. دنیا بھر میں اس سال 23 مارچ نہایت جوش و خروش سے منایا گیا. اب جبکہ پاکستانی فوج امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہے، اور اس سال 7 سال کے بعد 23 مارچ کی پریڈ منعقد ہوئی، جس سے دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اطمینان کا سانس لیا. اس جذبے کو دیکھتے ہوئے پورے امریکہ میں بھی 23 مارچ اور یوم قرارداد پاکستان لاس اینجلس، شکاگو، نیو یارک میں نہایت عقیدت اور احترام سے منائی گئی. ان شہداء اکرام جنہوں نے بےحد قربانیاں دیں اور اس قیادت کو جن سے پاکستان بنا کر دم لیا، خراج عقیدت پیش کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے خوبصورت اور پروقار تقریب قونصل جنرل حامد اصغر خان صاحب کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں کانگریس مین، میئر، LAPD، شریف ڈپارٹمنٹ نے شرکت کی اور پاکستان سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا. اس موقع پہ شرکا نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. Good morning. It is my pleasure this morning to be representing the Mayor of Los Angeles at this glorious occasion. It's but one square, the Pakistani community in the
beautiful, beautiful fabric of the quilt that makes up Los Angeles. And we are so happy that we have all of you here today to celebrate this morning. Or whether we are sitting with you and your leadership in strategic dialogue. The President's commitment to work together to strengthen U.S.-Pakistan relations and advance our shared interests of a stable and secure, prosperous Pakistan and region extend here to the United States. We celebrate the opportunity to stand with you today and celebrate the commemoration of Pakistani independence. The President honors the contributions of Pakistani Americans to the vibrancy of this country. I have been privileged to witness firsthand this Consul General's amazing hard work on behalf of the community here, Pakistani Americans, strengthening relations, bringing awareness, treating us with wonderful programs and a beautiful new consulate. May his, as was mentioned. I want to say from my own personal experience, being to Karachi, been to Lahore, been to Islamabad, been to Peshawar, been to Rawalpindi, and up the Khyber Pass to the border of Afghanistan. All of this was made possible by the Pakistani police. And although police will never be perfect, including the United States police, law enforcement, no one's perfect. But we have a pure intention. And therefore, Pakistan hosted me in every aspect of my visits. And when I met our various, I met President Sadari when I was there. I met President Musharraf while I was there. And we talked about the public safety of Pakistan. We talked about the public safety of America. वाइस कौंसल जनरल कमरबाज खोकर ने सदर मोहतरम पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पढ़ के सुनाया. The 23rd of March marks the momentous occasion when Muslims of India resolved to struggle for an independent state based on principles of equality and justice. It was on this day, 75 years ago, that great thinkers and political leaders came together to embark upon the journey for independence. Quaid-e-Azam realized that it was the right of every Muslim of South Asia to enjoy freedom, equality and social justice. बरसगीर के मुसलमानों ने 75 साल कबल अपने लिए एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़म का इजहार किया था. उनके मोहतरम कायद ने करार दिया कि जनूबी एशिया के मुसलमान हर लिहाज से एक आज़ाद कौम हैं. उन्होंने समाजी इंसाफ, खुद इरादियत और बराबरी के असूलों की बुनियाद पर एक अलग रियासत के क़याम के लिए वलवला अंगेज़ जिद्दोजहद की क़यादत की. आज़ादी की इस जिद्दोजहद में बेशुमार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन कायद अपने वाज़ेह मकसद से पीछे नहीं हटे. मुसलमान कौम ने कायद-ए-आज़म के पुख्ता अज़म की फ़राख़दिली से तायीद और हिमायत की और इसके नतीजा में मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन मारज़ वजूद में आया. कौंसल जनरल हामिद अज़हर खान साहब ने मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल और आने वाले बेहतरीन दिनों का जिक्र किया. But the commonality that I want to touch upon today is the fact that both of us, the American people as well as the Pakistani, we were both a colony of Britain. So in 1940, what the people, the Muslims of the subcontinent resolved was that they would like to be free and they would like to have their own democratically elected government in their own home. We had a lovely event yesterday in Anaheim, which was put together by the community, specifically by Severe Pakistan and Pakistan Link. And this morning, it's a gathering of friends to remember that very special day and to feel good about the fact that we have, despite the fact that most of you are Pakistani Americans or Americans, that Pakistan today, despite all its challenges, has so many friends around the world. And I'm deeply honored and grateful to all of our friends from Orange County, from the city of Los Angeles, from the White House,
all of those people who have come here today to honor Pakistan. Aisha, my wife, and myself, we're humbled with your presence. May God bless you all. Pakistan, Zindabad, long live Pakistan. मेरे व्यूज़ ये हैं जी कि जो प्रोग्राम है सफ़ीर पाकिस्तान वो वाकई एक पाकिस्तानी सफ़ीर का काम कर रहा है बखूबी। पाकिस्तान से इतनी दूर 23 मार्च की सेलिब्रेशन, इतने हज़ारों लोग वहाँ आए उस तकरीब में और ऑनर किया गया पाकिस्तानी जो एक इम्पॉर्टेंट डे है, हिस्टोरिक डे है, उसको मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने किया ऑनर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनर किया। कि जितनी भी तारीफ़ की जाए इस किस्म के इवेंट्स की वो कम है जी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वेस्ट कोस्ट पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, शायद ही दुनिया में कहीं और इस किस्म की वाइब्रेंट, डाइवर्स, प्रोग्रेसिव और लिबरल कम्युनिटी कहीं भी पाई जाती है। So you bring good feeling? Sir, good feeling नहीं थी, it was a wonderful feeling. I felt proud to be a Pakistani yesterday at that event and to celebrate 23rd March, the 75th anniversary of 1940 with all the Pakistanis who were there and our American friends. It was a wonderful experience. Mr. Hanif Khalid Sahab, you came all the way from Pakistan. What is your experience yesterday, Revolution Day? It's a great honor for me that I have been invited from Pakistan. I am the resident editor of Daily Jang, and I am proud of these celebrations you have made yesterday and today, because it is a very well organized festival of Pakistan Day, and I salute to the organizers and I salute to the Pakistani community in western coast of United States of America. दूसरी बड़ी तकरीब शिकागो में हुई जो नहायत ही पुरवकार और शानदार रही, जिसमें शहर भर की मुमताज़ शख्सियतों ने और हुकूमती नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की और यौम क़रारदाद पाकिस्तान पर अपनी मोहब्बत और दोस्ती का वालियाना इज़हार किया। I commend the Consulate General of Pakistan for the important work on behalf of the Pakistani community in Illinois. The Pakistani American community represents a vital and important part of our state. Dear Consul General Terminci, as mayor and on behalf of the city of Chicago, it is my great pleasure to congratulate you and the Pakistani American community of Chicago on your celebration of the National Day of the Islamic Republic of Pakistan. I encourage all Chicagoans to join people of Pakistani heritage around the world in honoring the establishment of your republic on March 23, 1956. It is my distinct pleasure to the Pakistani American community as you celebrate Pakistan's Republic Day. Thank you for all the work you do to celebrate the rich and proud culture and heritage of Pakistani Americans. United States and Pakistan stand together in the war against terrorism. I joined you in my strong support for the elected government of Pakistan. As you know, I traveled throughout the Pakistan when I was a congressman on providing assistance to the Pakistani people and their government. I'm looking forward to building good relationships in the years ahead and continue my work on U.S.-Pakistan relations in the U.S. Senate. I believe that when we provide an opportunity for our young people to go to Holland Street, it's a win-win situation for all of us. And I just want your wonderful Consul General Leary, who is my friend,
to know that I have love in my heart for our children, no matter what their ethnic background is. There's this big, wide, wonderful world out there, sir. We have to figure out a way to love one another. If you don't love one another, don't dislike anyone because of how they came into this world. I would like to thank each one of you individually for joining us to celebrate the 75th National Day of Pakistan. I would especially like to thank our Honorable Chief Guest, Honorable Jesse White, the Secretary of State of this beautiful state of Illinois. And my thanks to all my colleagues in the Consular Corps who turned out despite a very cold weather in such big numbers. So the last event of August 16, 2014 has been the game changer. As we speak today, right now, Pakistani soldiers are fighting hand-to-hand combat and muzzle to muzzle to push back the forces of darkness, ignorance, and bigotry. The loss of 135 innocent children will never go wasted. The relationship between Pakistan and US are at an upward trajectory. The recent visit of Secretary of Commerce Jenny Pritzker to Pakistan for the investment conference and the participation of over 160 business houses from US And on behalf of Mayor Rahm Emanuel and the City of Chicago, I just want to congratulate the Pakistani American community on the Pakistan's National Day today. This was a wonderful celebration and I'm honored to be here. बहुत बहुत शुक्रिया जियो पाकिस्तान और सफ़ीर पाकिस्तान का कि आज आपने यौम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है 23 मार्च उसकी तकरीबात को अपने कैमरे में मशहूर किया और आज आपने देखा कि तमाम ही सिफारती जो नुमाइंदे हैं शिकागो में मिड वेस्ट रीजन को मुख्तलिफ अमलाक से जो मंसूब हैं वो सब आए। उसके अलावा बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वक़ार अली ख़ान साहब का, सफ़ीर पाकिस्तान का और जियो का, जिसने हमें हमेशा पजीराई की है। आज आपके 6 इंच बर्फ़ पड़ी थी पर माशाल्लाह कोई 270-80 लोग आए। जेसी वाइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर थे, चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा 34 काउंसिल जनरल्स आए। इतनी बड़ी तादाद में मैंने बहुत कम देखे काउंसिल जनरल्स को और एक बड़ा सॉलिड प्रोग्राम था। इसमें हमने फोकस किया कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह 2015 में एक नया पाकिस्तान बन रहा है और इंशाअल्लाह हमने जो फोर्सेस हैं नफ़रत की, जहालत की, उनको हमने शिकस्त देनी है और वो सिर्फ मुमकिन है कि हमारे लोग तालीम पे फोकस करें और तरक्की पे फोकस करें। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों और अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस 75वीं सालगिरह पे यौम पाकिस्तान के और पाकिस्तान की करारदाद के। और इसके साथ ही आज जो प्रोग्राम पेश हुआ उसमें आपने देखा होगा कि एक थीम था, इल्म का थीम, तालीम का थीम। तो मेरी बड़ी दुआ है, बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हम तालीम को फ़ौक़ियत दें या तालीम हमारी तरजीहात में होना चाहिए और पाकिस्तान का हर बच्चा इल्म हासिल करे और इल्म की रोशनी से हमारा मुल्क जगमगाए। मेरा नाम इरम शाह है और हम यहाँ ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी शिकागो में हैं, मना रहे हैं पाकिस्तान डे। आज बहुत खूबसूरत दिन था। हमारा कई सिफारती मेहमान आए। आज का टॉपिक था अबाउट women education and the evening was dedicated to the tragedy of Peshawar school. तकरीरें हुई और बहुत अच्छा माहौल था। इंशाल्लाह ऐसे दिन फिर और बहुत आएंगे और हम मनाते रहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज 23 मार्च पाकिस्तान का दिन जो है वो ईस्ट वेस्ट शिकागो यूनिवर्सिटी में मनाया एंड वी हैड सम सूफी डांस हम लोगों ने परफॉर्मेंस की एंड इट वाज अ ग्रेट डे टू बी रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन शिकागो के अंदर। जी नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर लोधी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान। आज मैं न्यूयॉर्क मिशन से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज 23 मार्च को यौम जमहूरिया के मौके पर रवायती अंदाज के अंदर मिशन कौंसलेट के अंदर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में पाक मिशन में होने वाली तकरीब नहायत मुअस्सर और कामयाब रही, जिसमें पाकिस्तान की साबिक़ा सफ़ीर डॉक्टर मलिया लोधी और मौजूदा सफ़ीर पाकिस्तान मिशन यूएनओ ने भी शिरकत की और कौंसल जनरल न्यूयॉर्क ने हाज़रीन को खुश आमदीद कहा और कौमी तराने की गूंज में परचम कुशाई की गई। इस मौके पे शहर भर के मुमताज़ शख्सियतों ने हिस्सा लिया और इस मौके पे खुसूसी तौर पे सब्ज़ और सफ़ेद रंग का केक काटा गया, जिसको परचम की शक्ल दी गई थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं समझती हूँ कि ये नया सफ़र है, आपने ठीक कहा, इसलिए कि मैं बायलैटरल जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं वो तो मैंने किया बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन ये एक नया तजर्बा है मेरे लिए। तो प्रोफेशनल चैलेंज बहुत बड़ा है मेरे लिए, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी टीम जो है यहाँ पर मिशन में, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस के लिए मिशन है, वो बहुत अच्छी टीम है। तो उनके साथ ही मैं मिल के आगे जा सकती हूँ, इसलिए कि देखें एक अलग एक शख्स या एक इनफराद तो कुछ नहीं कर सकता जब तक टीम आपकी मजबूत ना हो। तो मैं उनसे सीख भी रही हूँ अब और कुछ सिखा भी रही हूँ। दोनों तरफ चल रहा है मामला और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान का नाम और रोशन करें, पाकिस्तान के जो मफाद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और पाकिस्तान की इस तरीके से प्रोजेक्शन करें कि जो मिसपरसेप्शंस हैं हमारे मुल्क के बारे में उनको दूर किया जाए। अच्छा मलिक साहब, सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम पिछली एक दहाई से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जियो टेलीविज़न के ऊपर सफ़ीर पाकिस्तान का आपने यकीनन देखा भी होगा। आप सफ़ीर पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही हैं और उसके तवज्जुह से कोई ख़ास एक अहम पैगाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को देना चाहेंगे? जैसे आपको मालूम है मैं भी जियो से मेरा ताल्लुक़ रहा है और जंग न्यूज़ ग्रुप से तो मैं बहुत ही अरसे से मेरा ताल्लुक़ रहा है और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मैं मुख्तसर अरसे के लिए जा रही हूँ सफारतकारी में, वापस तो सहाफ़त में ही जाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है उससे बहुत से लोगों को जो मालूमात उनके पास नहीं है उस मालूमात में उनका इजाफ़ा होता है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो यंगर जनरेशन है उनको ज़रा ज़्यादा लाएँ, उनके बारे में ज़्यादा आप बताएँ लोगों को, और जो हमारी कम्युनिटी के रोल मॉडल्स हैं वो लोग जो कि कामयाब हुए हैं यहाँ पर और अपनी मेहनत से, मैं समझती हूँ कि उन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए और यंगर जनरेशन के जो रोल मॉडल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क के कौंसल जनरल राजा अली इजाज़ साहब मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात सफ़ीर पाकिस्तान में राजा अली इजाज़ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क से करवाते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम आप देखते हैं, यकीनन आप देखते होंगे जियो टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान का कम्युनिटी प्रोग्राम आता है। इसके तवज्जुह से आप इसको किस नज़र से जानते हैं और इसके तवज्जुह से कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी न्यूयॉर्क को पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सब पाकिस्तानी बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों को आज के दिन के हवाले से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 23 मार्च के हवाले से ये एक अज़म का दिन है जी, और मेरी यही दरख्वास्त होगी हर पाकिस्तानी से कि वो इस दिन के हवाले से पाकिस्तान को अपने दिल में याद रखे, हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को सबसे पहले रखे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है, जैसे हमारे सब बहन भाइयों को है, कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जितनी मुश्किलात हैं वो दूर होंगी और आसानियाँ पैदा होंगी। आवाज़ का जादूगर, शहनशाह सुरसंगम, राहत नुसरत फतेह अली खान, द लिविंग लेजेंड, back to Los Angeles in concert, Pasadena Civic Center Auditorium, May 17th, Sunday. Proud presentation of Dylan and Tish Entertainment. Call for ticket and sponsorship today.
السلام علیکم دوستو، میں ہوں راحت فتح علی خان اور میں آ رہا ہوں آپ کے شہر لاس اینجلس میں. ہمارے کانسرٹ کی ٹکٹس آج ہی لیجئے. میرے ساتھ ملاقات کیجئے اپنے شہر میں. لاگ آن ٹو www.facebook.com/RFAKworld. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سفیر پاکستان، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان. یہ چھوٹی سی ایک بات چیت ہے. دیکھیں، 23 مارچ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف عوام کے لیے ہوتا ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے. یہ کوئی ایکسکلوزیو اور VIP لوگوں کے پروگرام نہیں ہوتا ہے. میں نے پہلے بار بھی آپ کو کہا ہے کہ میں ہمیشہ عوام کی نمائندگی کروں گا، عوام کے میں ساتھ رہوں گا. ابھی حال میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ ڈیلس کے اندر 23 مارچ کے موقع پہ ایک ڈنر ہو رہا ہے رچ کارلٹن میں، جس کی انٹری پاس $200 ہے. آپ خود بتائیں، ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی 23 مارچ کے موقع پہ اس پروگرام میں کیسے انجوائے کرے گا؟ وہ اپنے بل پے کرے یا $200 دے کے وہاں جائے اور ہمارے سفیر جناب عباس جیلانی صاحب سے ملاقات کرے اور VIP لوگوں سے ملے. اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ادارے، کچھ آرگنائزیشن جو ہے فالس ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. ایسے آرٹسٹوں کو ڈال دیتے ہیں جو دور دور آنے والے نہیں ہوتے ہیں. پورے دنیا کے آرٹسٹوں کی تصویریں وہ اپنے فلائر پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آرٹسٹ آ رہے ہیں، جبکہ ان کے نہ ویزے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی فالس ایڈورٹائزنگ ہے، اور جو بھی اس چیزوں میں اپنا نام ڈالتا ہے وہ مجرم ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری درخواست ہے آپ انہی لوگوں کو پروموٹ کریں جو آپ کے پروگرام میں آ رہے ہوں اور جن سے آپ کا ایگریمنٹ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ ان کے پاس ویزا بھی ہے. ناظرین، تو یہ تھی آج کی بات چیت. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.